Hello everyone, this is Avinash. I welcome you all on my YouTube channel that is Quantaphytech. So guys, आप लोगों ने thumbnail से तो समझ ही गए हो कि what I am going to discuss today. Yes guys, today I am going to discuss everything from A to Z information about the upcoming KVS Recruitment 2025. So guys, before I start, I would like to quote a one beautiful line: one book, one pen, and one teacher can change the entire world, right? So now, without wasting our time, let's start with our session. Let me open the PPT and share with you. Okay, so here we go. I think so. I have shared my PPT with all of you. All right, fine. So in today's session, I have divided it into five important parts. First part, on your screen, you can see that first part I kept as a FAQs, that is the frequently asked questions regarding the KVS Recruitment 2025. In this one, I will discuss various things about the KVS, its notification, its eligibility criteria, what is the syllabus, and so on. Right. Second point, in this one, I will going to discuss about the strategies which a student should adopt to do well in the KVS examination. Third one is the QPT services, that is the Quantaphytech services, which we are going to provide you. Fourth one, very important, that is do's and don'ts. You have to do what you have to do for your exam and what you not have to do for your exam, right? Last one is contact us, guys. If you want to contact us for anything, like say for any queries related to the KVS recruitments, if you feel that you are not able to do the preparation properly, then what to do, right? So anything, in this one, in this last part, I will give you the contact details, how you can contact me, right? Or our company, right? So now I'm going to start my session here, start the first part. So that is a FAQ, frequently asked questions. So in this one, what I'm going to discuss, first one I'm going to discuss about the recruitment rules. Second one I'm going to discuss about the syllabus. Third one I'm going to discuss about the exam pattern. And the fourth one is notification update. What is the current update about the notification? So now moving forward, first part is recruitment rules. So I hope so that all of you are aware that few days back, on 20th March 2025, if I'm not wrong, KVS has given their updated recruitment rules. I'm going to discuss about it now. क्या है guys, recruitment rules में क्या क्या हम लोग हैं guys, let me clear it. I'm talking about the PGT Computer Science, right? So I'm just going to focus or keep myself towards the recruitment process of the PGT Computer Science. They are definitely TGT and primary as well, PIRT recruitment as well in the KVS one, in the upcoming notification, right? But I'm going to confine myself on the PGT Computer Science recruitment only, right? Now, moving to the PGT Computer Science recruitment rules. Okay, so guys, if you see the screen, what you can see here, right? Here you can see that they have given, it is a very good, good news for us, that it's a huge recruitment, guys, with respect to the PGT Computer Science. They have anticipated that there will be around 1,196 vacancies for PGT Computer Science in KVS 2025 recruitment. Now, the best thing, no, paisa. Paisa. Definitely, we all are working for money, na? So, here we go. In the second part, they have mentioned that how much paisa you are going to get. And that is definitely a motivational thing, guys, for you. Level 8, your basic is start from 47600, that is 47,600 to 1,51,100, right? This is the entry scale you will get. Once you will join, you will get the salary between these two. Now, level 10, after your promotion to the senior level, you're going to get
56,100 per month, not the annual, guys. Take it. To 1,77,500. And after that, once you go to the higher level further, that the selection scale, there your scale will be at the level 11, and you will going to get rupees 7,000. No, yeah, it is 7,700 to 2,87,000. Yeah, 2,87,000. 8,700. This much you will get, right? So these are the information given in the recruitment rule. I hope so that, guys, there is some mistake, in the typo mistake. Basically I have taken it from the notification itself. It should not be 7,700. It should be 77,000 or something, 67,000 around, right? Because basic should not be, it should not be start from 7,700. There will be some change. There will be some mistake here. I will update it in the next video, definitely. Now, age limit. Now, if I talk about the age limit, you should not exceed 40 years. That means you should be less or equal to 40 years. I'm talking about the general candidates, right? Definitely, you are going to get some kind of relaxation, age relaxation that is given here. 5 years relaxation in the upper age limit in the case of employees of the KVS. That means what? Let's say, guys, I'm giving you an example. Let's say currently you are a KD employee, right? Let's say you are working as a PRT teacher, but you want to be a PGT computer science, right? In that case, you're going to get 5 years of the relaxation. Fine. I have given only the example, PRT example. It might be, you are at, KV employees. No, it is not necessary that you should be PRT. You should be working as, KVS. Then you are going to get 5 years relaxation in the age. Age relaxation, third point, age relaxation for the SC, ST, OBC, PWD, ex-servicemen, and the female candidates as applicable under the government of the India and the KVS rule. So, guys, for the candidates who are having some, categories like say SC, ST, OBC, PWBD, and ex-servicemen and female candidates, they are going to get the relaxation based on the government of India and KVS rules. I will further, in the next slide, I will definitely going to discuss about this one in detail, right? Okay. Now, come to the third point, that is the educational and the qualification required for PGT computer science. First point is what? MSc, if you are any candidate having the MSc in computer science or IT or MCA, and the main thing is that it should be, you are going to get marks greater or equal to 50%. This is necessary, right? Next is, it might be that, you have done ME or MTech in computer science or IT, and the marks should be greater than 50%. Third, these are the essential I'm talking about, right? Fourth, if you see that, BA degree with 50%, 50 or more than 50%, or 4-year integrated degree with 50%, including BA. So if you compare, there's a huge blow, I can say, for the candidates who are preparing for PGT computer science for a long time. The point is that if you talk about the 2022 notification, KVS notification over there for our PGT computer science, BEd was not necessary. It was not essential. Yes, definitely, if you have BEd, it's a positive point. But in the previous year recruitment rule or previous year notification, BEd was not necessary. But this year, they made BEd as a necessary. So this is a big blow, guys, big disappointment for the, candidates who are preparing for the PGT computer science, right? Okay, anyways, guys, what I can say or what you can do for here, do here, we should have to follow the recruitment rules. If anything, in future, if any update will come, definitely I will, ensure that I will give you the proper knowledge about that. But for the time being, this is the scenario, right? Many students or many teachers, I have seen that they were saying that they will go to the court and, definitely they try to revert this decision of the KVS. It might be, if it is good, if it is good for us, if it will happen, then definitely good for us. But I'm just telling you what the current situation is, right? So currently you need, a student having a BEd degree, then only he can apply for the PGT computer science. This is given in the recruitment rules, which was published on 20th March 2025. But there's, hope for the best, hope for the best, because still we don't have the notification published by the KVS for the 2025. Might be they will eliminate this criteria. If it is, then balle, guys, we are going to do the bhangra, because it's a good for us, right? Now, moving forward,
moving forward here, if I'm going to the next slide, you can see that. Let me remove this entire thing from the screen. Now, as previously I told you that I'm going to discuss about the what are the age relaxation you're going to get if you are from SC, ST, OBC, PWD, ex-serviceman, and female candidate based on the KVS rule and Government of India rules. This one is, guys, this one I have taken from the last year notification of the KV. I'm not sure that this year they will keep this one as it is, but for the time being, we are going to take this as a reference, and we can hope that this will not going to change, further in this notification, the coming notification. Now, for the SC and ST, you are going, if you are SC and ST, if you are in the category of SC and ST, then you are going to get 5 years of the relaxation in age. If you are an OBC category, then you are going to get 3 years. If you are a woman, right, all categories, any from any categories. For the teaching post, PRT, TGT, librarian, and PGT, definitely you are going to get 10 years of the relaxation. So this is good for the women, female candidates, right? It's good, we are, government is trying to empower women, and this is a very nice thing for us. We should have to, give kudos to the government that they are working hard for the women empowerment. Okay. Now, next one, candidates with the 3 years of the continuous service in the central government, provided the posts are in same and allied cadre, and applicants claiming age reduction under the para should produce a certificate from his or her employers to the effect that he or she is a government servant as on the date of the advertisement, as per the Government of India rule. So, in short, if you are a candidate of the central government employee working having a 3 years of the continuous service, then you are going to get 5 years of the 5 years relationship for the general candidate, 8 years for the OBC candidate, and 10 years for the SC and ST candidates, right? Next one, guys, person ordinarily domiciled in the state of the Jammu and Kashmir during the 1st January 1998, 1980 to 31st December 1989, then you are going to get 5 years of the relaxation. Person with the disabilities, including women, if you are in PW, person with a disability, right? Then, and including women, and if you are in the SC and ST category, you are going to get 15 years of the relaxation. If you are in an OBC category, then you are going to get 13 years of the relaxation, age relaxation. If you're in a general category, you are going to get 10 years of the age relaxation. Okay. Now, further, guys, few other things are given, right? Those are not much important for all of us. Definitely, I'm not going to I'm not biasing here, but these are I don't think so that if I'm going to cover these other ones as well, the video will be very lengthy. So for the timing, I'm just skipping these the other things, right? Other portions, right, of this slide. Definitely, I am going to give a screenshot of this slide in my description box. If anyone having doubt in this one, please go to the description box and check out from over there, right? Okay, now I'm moving further to the next one. Next slide. Right, now I'm going to talk about the PGT Computer Science syllabus. So again, guys, whatever the things I'm showing it to you, it is, if I talk about the recruitment rules, definitely it is the updated one, which was published in the 20th March 2025, which is updated one. But if I talk about the age relaxation criteria or the syllabus, I am referring to the last notification of the KVS that was in 2022, right? And I'm referring that one on the syllabus. Okay, so now moving further to the syllabus one. So this is the syllabus we have. Now let me go through the syllabus one by one because it is very important to discuss it. Okay. So first subject is computer system and organization. Under that, what are the topics we have? We have the basic computer organization, introduction to the computer system. We are going to talk about the hardware and software, input devices, output devices, CPU, memory, right? Primary memory, primary cache, and secondary one. Unit of memories, that is bit, byte, KB, MB, GB, and DB and PB. This is terabyte and the petabyte, right? So point is that here we have to cover the basic computer organizations, right?
right? About them, we will learn about the basic computer system, right? How it will work, what are the hardware and software. So, we have what kind of the memories we are going to use, different types of memories we have, right? Okay. And the next is the type of the softwares under this category. We are going to, learn about the what kind of the different softwares we have, right? Generalized way. Next is we are going to talk about the operating system. And the last one is the Boolean logic. Under this, we are going to cover the non-gate, all the gates, where we have the gates basically. De Morgan laws, Boolean algebra, basically we can talk about logical circuits as well. We are going to talk about, right? Okay. Under the second one, the computational thinking and the programming. Guys, if I tell you here, we are going to talk, we are going to learn more of the coding language that is Python. In KVS syllabus, we have Python, right, as a computer language. Another thing we are going to talk about a little bit about the step to solving the program, step for solving problem solving, analyzing the problems, developing an algorithm. Basically, the keyword is algorithm. We will talk about the algorithms, testing and debugging definitely. Fine, representation of the algorithm. So in this part, first part, we are going to talk about the algorithm. Second part, we are going to talk about the codings, coding of Python. Over there, there are a lot of things, we are going to check about the Python tokens, that is the keywords, identifiers, literals, operators, and so on. So these are the things we have to cover under the computer thinking and programming. Now, moving further to the next part. Okay. Third, in the next slide, we can see here the third chapter is society, laws, and ethics. Under that, we are going to talk about the digital footprinting, digital society and religions, net etiquettes, communications etiquettes, social media etiquettes, and so on. Cybercrime is an important topic from this subject, right? Cyber safety, very important, guys. Nowadays, wars are not dependent upon the ammunitions. Nowadays, countries are countries fight on the basis of cyber, right? Cyber attacks are more prominent nowadays, right? So this is very important topic, right? Nowadays, this is what I can say burning topic we have, burning topic. Okay, next is the computational thinking and the programming too. Here we are going again talk about the Python language. Under that, we are going to talk about the different kind of functions available in the Python. Introduction to the files. Here we are going to talk about the different kinds of the files, text file, binary files, CSV files, and file open modes, R plus, read, write, and W plus, A plus. These kind of things we are going to discuss about. So this is more or less in this part. Now, next part, we are going to talk about the networking basically. Right? We are going to talk about the networking here. Under the network, we are going to talk about the evolution of the networks, that is from historical part of the current date, how network or computer network have been developed or have been revolutionized to reach to the current level. Right here, we are talking about the different kinds of evolution of the networking, APRANET, NS, FNET, and the internet. Right. Now, next is the data communication technologies. We are going to talk about the concept of the communication, components of the data communication, sender, receiver, and messenger communication, and so on. After that, we are talking about the different technologies like say IP address. How I hope so that all of you are aware of the IP address. Still not. We will cover this topic in a very length and breadth, right? Switching techniques, circuit switching, packet switching, different kinds of switching we have. Then transmission medias. Definitely is very important to learn about the transmission medias. There are, every day, there will be some kind of revelations or some kind of the new technologies are coming up. In the case of the transmission medias, under that we are going to talk about the wired communication, media, twisted pair cable, coaxial pair, fiber optics, and so on. Then we are talking about the network device, that is the modem, Ethernet card, RJ20, RJ45 repeaters, hub, and so on. Right. Now, next is the database management, right? In the database management, we have the database concept over there. How, what is database concept? What is database? What are the entity relationship model? Different kind of relationship models. We are going to talk about the RDBMS, right? That is relational database management system. So different database concept we are going to talk about. We are talking about functional dependencies. We are going to talk about the normalizations, right?
We are going to talk about the normalizations, different kind of normalization, first normal, second normal form, third normal form. If necessary, then we will cover the Boycott normal form as well, right? So here we are going to talk about the relation database model, attribute, tuples, domain, degree, cardinality, different kinds of the keys, candidate keys, primary keys, alternate keys, and foreign key. Next part, so this part, database management having the two parts. One is the theoretical part, right? Theory part basically. Second part is the practical part. Over there, we'll talk about the different kinds of concepts related to the database. Here we will talk about the SQL, that is a structured query language. Basically, we are going to talk about over there. Query languages, different kinds of data definition language, data manipulation language. We will talk about the different kinds of commands we have in the SQL, right? Okay. Now, guys, moving further, still, we have few parts left. अगर आपको कोई भी यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, आपको नहीं समझ रहा, तो you can talk to me. You can write your comments below. I will check it personally and definitely I'm going to reply on them. Right? Okay. Now we are going to, we are moving further to the introduction of the computer system. Over there, we are going to talk about about the computer and computing, evolution of the computing devices, components of the computer system and their interconnections, input, output. Right? Input, output, and software. Then we will talk about the computer memory, units of the memory, which we have already discussed. That is KB, byte, bit, terabyte, petabyte, right? Hexabyte, right? These kind of bytes, basically units of the memory we are going to talk about. Then types of memory, that is the primary and the secondary memory. Softwares, we have already discussed type of the software in the first part, right? In the computer organization, basically. Fine. So we are not going to discuss it further. This is the basically more or less we have already covered. Next is the introduction of Python. Again, we will talk about the Python, right? Basics of the Python programming, Python interpreter, interactive in the script mode, and so on. Dictionary is an important concept which we are going to cover in the previous year paper of PGT Computer Science. There were a lot of questions about that from the dictionary topic. We will see it again, right? I have आज मैं सब कुछ लेके आया everything we will discuss it. A to Z, everything we are going to discuss today about the PGT Computer Science, right? So here we are going to discuss about the different kinds of functions which are related to our dictionaries, right? Okay, so moving further, now we are going to discuss the database concept and the structured query language. Already we have done, right? Different kinds of database concept we are going to discuss about, right? And definitely advantage of the SQL language, DDL language. There are a lot of kind of language commands. We have DQL, data query language, DDL, data definition language, DML, data manipulation language, DTL, data transaction language. So there are different types of languages or commands. We have different commands under the SQL language, and we have categorized them into the DDL, DML, DTL kind of, right? So we will discuss it, further. बहुत डिटेल में करने वाले गाइस, मजा आ जाएगा आप लोग बस क्लास अटेंड करते रहना गाइस, आपको केवीएस को लेके चिंता ही नहीं करनी. Everything I am going to cover, right? Fine, don't worry about that. Acha, we will also see that how to create a database using the MySQL. This is very important, guys. MySQL. What is that? Basically, वैसे नहीं करना कि ये नहीं समझना कि MySQL is SQL. No, it's not. Na? SQL is a language, right? MySQL is a RDBMS, that is relational database model, right? Relational database management system basically we have, right? So we are going to use this one as per the syllabus. There are many other as well, like say Oracle we have listened it out. I hope so that all of you take it up. We have the PostgreSQL as well. Fine. So many one we have, but we are going to use this MySQL, right? As per the syllabus. Okay. Next is the emerging trends, right? What are the emerging trends we have? We have artificial intelligence. जिससे पूछ लो यार, AI कर लो, मैंने AI सीख लो यार, AI बड़ा काम है यार. तो गाइस इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग बात करने वाले. मशीन लर्निंग डेफिनेटली, रोबोट्स आप लोग देख पा रहे हैं, डिफरेंट रोबोट्स भी है, लाइक से जो हम लोग का मार्स में गया था, सो और यू कैन से दैट एक्सपेडिशंस फॉर द मून एज वेल. तो हम लोग अलग अलग रोबोट भेज थे, लाइक से प्रज्ञान रोबोट, राइट? आई होप सो दैट सबको ने सुना हुआ है. तो प्रज्ञान रोबोट हम लोगों ने जब सुना है, प्रज्ञान रोबोट. So this is nothing but we are teaching the machine what to do. That is the machine learning basically, right? Next is natural language processing, immersive experience, that is AR, VR, robotics,
big data and its characteristic, Internet of Things, IoT, right? Census and the smart cities. We will talk about these things in the emerging trends as well, right? So definitely I'm going to cover it for the, in the coming classes. I'm going to cover them, these one. Now, next is, guys, again the talk about the, see guys, syllabus is lengthy. Definitely, I'm taking time to cover it, but definitely it is necessary to talk about each of the topics separately so that you will have a proper idea that what you have to, prepare for the examination, right? ठीक है ना? So guys, ये बहुत important है कि you are not beating around the bush. Target आपका इधर है, आप यहाँ पे पढ़ लो. Not going to give the result. You should have to be very clear that what to read. No, basically guys, आपको पीएचडी नहीं करना, सिंपल सी पॉइंट है, ठीक है ना? आपको पीएचडी नहीं करना, आपको एग्जाम निकालना. तो एग्जाम के लिए सिलेबस पता होना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना? सिलेबस से ज्यादा बाहर भी नहीं पढ़ना है, उससे कम भी नहीं पढ़ना, ठीक है ना? तो सिलेबस को इसलिए मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ समझाने के लिए कि क्या क्या हम लोग करने वाले हैं अपकमिंग डेज, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर next हम लोग ये data handling and with the pandas. Panda is one of, what I can say, the module over there in the Python. So how you're handling the data using the Panda. Introduction of the Python libraries here, pandas and the matplotlib. Data structure, what are the different kind of data structure in Panda? Series and the data frames. Many questions came from these two topics, many questions. We will see it, in the further part of this session, we'll see it. Series, creation of the series, tail function, different kinds of tail function, indexing and slicing. We will talk about the data frames, creation from the dictionary of the series, list of dictionaries, and so on, right? We will talk about the Panda module in this section. Again, Python. Related to the Python language. Again, there is DBMS SQL. Here we will talk about the different kind of functions. Math function, whether that's like say power, round, mod. Text function, UCase, uppercase, LCase, lowercase, mid, substring, and so on. Last is date function. So these are the different kinds of functions which we will going to cover them, which are available in the SQL. Now moving forward. Okay, so here we have introduction of the computer networks. Already we have done this part. We have covered this part. I'm not going to talk much about here. Just different types of the networks. We have LAN, MAN, and the WAN. Devices, modem, hub, switch, repeaters, routers, gateway. We've already talked about this one in the previous slide. Network topologies, star, burst, tree, and mesh. We have different kinds of topologies. Topology is nothing but the way you are designing your network, right? Let's say if I talk about the bus, then your network will be like this a bus, right? Mesh is what if we have the systems like this, different system. This one, everything is connected to each other, like say this one. So it is the mesh basically. Every system is connected to the other one, right? If I talk about the tree, so tree is like this way. This is the designing pattern of the tree, kind of, right? And if I talk about the star is what, like say this way, in the cycle, right? This way. So these are the different type of network topologies which we have. Introduction to the internet, definitely we are going to talk about the URL, www, World Wide Web, and then its application. Then its application are definitely web, email, chat, and VoIP. VoIP is nothing but क्या है VoIP guys? थोड़ा कमेंट में लिख के बताओ तो क्या है VoIP? ओके, मैं बता दे रहा हूँ अभी. अच्छा नहीं बताओगे आप? बस ये सिंपल कुछ नहीं है. ये क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. तो क्या है हम लोग का वीओपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, बेसिकली ये हम लोग का. ओके, सोशल इम्पैक्ट्स डेफिनेटली हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं. डिजिटल फुटप्रिंट्स हो सकता है, साइबर बुलिंग हो सकता है, साइबर अटैक्स हो सकता है, ई वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है ना? आज की डेट में गाइस ह्यूज क्वांटिटी में ई वेस्ट हम लोग का जनरेट हो रहा है. उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, हजार्डस क्या हो सकते हैं, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, ठीक है ना? इवन दो गाइस अर्थ पे तो हम लोग का ई वेस्ट हो ही रहा है, हम लोग स्पेस में भी हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स वहां पे भेजे जा रहे हैं. तो स्टेट भी हम लोग हम लोग स्पेस भी हम लोग का पॉल्यूट हो रहा है ड्यू टू ई वेस्ट, राइट? Awareness about the health concern related to the uses of the technology. So these are the topics we have under this societal impacts. Now we are going to talk about the examination pattern here. So again, dependent upon the 2022 KVS notification, I'm going to discuss this with you.
So here the exam pattern is like say in the part 1 you will have a general English and general Hindi. You will get 10 questions from these two, right? And each one having 1 mark, so 20 marks from these two. Part 2 will contain general awareness or general knowledge and the current affairs, 10 questions, 10 marks. Next is reasoning ability, 5 questions, 5 marks. Computer literacy, 5 questions, 5 marks. For this part, guys, we computer science students should not have to learn, separately अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी से हो जाएगा ना. 5 मार्क्स तो हम लोग के लिए हम दावा करते हैं कि ये 5 मार्क्स मेरे हैं. इस 5 में से एक भी नहीं कटने वाला. ठीक है ना. अच्छा, ये ऐसी पढ़ाई करोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा, तब मजा आएगा यार. कि जब बोलोगे नहीं कटने वाला, मैंने बोल दिया 5 में तो 5 ही है. ठीक है ना. Now, part 3, we are going to talk about the perspective on the education and leadership. Definitely, it is common to whether talk about the TGT, PGT or PRT. This is, अब अगर स्टूडेंट थोड़ा होगा तो क्या ऐसे पढ़ाओगे, what are the different perspectives and the different things you should have to follow while teaching to a student, right? तो उससे 40 क्वेश्चन आने वाला है. अच्छा अच्छा वेटेज है, इसको पढ़ना अच्छे से. ठीक है. लास्ट वन इज द कंसर्न सब्जेक्ट. सो बीइंग एज अ पीजीटी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और पीजीटी कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट, राइट, हम लोगों को कंप्यूटर साइंस के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, वो भी 100 और 100 मार्क्स का. सो ओवरऑल वी हैव 180 क्वेश्चंस, राइट. वी हैव 180 क्वेश्चंस एंड वी हैव 180 मैक्सिमम मार्क्स वी हैव. ठीक है ना. टाइम भी मिल रहा है आपको 180 मिनट का. क्या प्यारा बनाया है इन्होंने. 60 घंटे के अच्छा बनाया बनाया ना. 180 क्वेश्चन, 180 मिनट, 3 घंटे. ठीक है ना. चलते हैं इंडिया में कुछ बोल रहा था ना कि ये 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता. ठीक है ना. चाहे आप ये हारो या जीतो. सिमिलरली गाइस, ये आपकी 180 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता. ऐसी तैयारी करो कि गाइस इस बार लगा दो, बन जाओ पीजीटी कंप्यूटर साइंस और देश को डिजिटल इंडिया की तरफ धकेल दो. बहुत जरूरी है गाइस, विश्वास करो. गवर्नमेंट कितना भी खर्चा कर ले, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना ले, लेकिन अगर डिजिटल इंडिया बनाना है तो हम टीचर्स, गर्व से कहो, हम टीचर्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर्स ही कर सकते हैं. हम ही बेस ग्राउंड पे जाके काम करेंगे, ग्राउंड लेवल पे जाके. आज भी इंडिया में 2 इंडिया बचता है guys, ठीक है ना. 2 इंडिया. ठीक है ना. पहला इंडिया INDIA, ये इंडिया जहां पे फुल ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, फुल ऑफ टेक्नोलॉजी, सारी सुख सुविधाएं हैं. जहां पे हम लोग एआई की बात कर रहे हैं, न्यूरल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं. ठीक है ना. फुल ऑफ टेक्नोलॉजी, सब कुछ अच्छी फैसिलिटी मिली, सबको पता है. और एक इंडिया है जिसको हम लोग कहते हैं भारत. ठीक है ना. कोई मुझे पसंद करे ना करे, बट ये सच्चाई है. इस भारत में गए आज की डेट में भी कंप्यूटर के बारे में सी भी नहीं पता. ठीक है ना. और अगर हिंदी में बोले तो का भी नहीं पता. ठीक है ना. वहां पे सही से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंची. बहुत ऐसी जगह है भारत में. उस ग्राउंड लेवल पे जाके केवल हम लोग काम कर सकते हैं. और अगर हमको काम करना है तो गाइस केवीएस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि केवीएस की ब्रांचेस ऑलमोस्ट इंडिया के हर जगह है. आप कहीं भी काम करना चाहो, नॉर्थ टू साउथ, यू नो ईस्ट टू वेस्ट और ईस्ट टू वेस्ट, राइट, कहीं भी काम करना चाहो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा केवीएस, राइट. सो टाइट इन योर बेल्ट, मेहनत करो गाइस, डू हार्ड वर्क, राइट, एंड बी श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट, राइट. Not for only the getting a job, but to change India, right? You should have some, motto, or you should have some goal that yes, I will contribute for my society, right? टीचर तो वही है ना guys, जो खुद जल के दूसरों को जाला दे, राइट. सो हम खुद जलना है. तो ये अगले 2 महीने या 3 महीने हमको जलना है guys, और जिससे हम लोग बाकी जिंदगी दूसरों को इजाजत दे सकें, दूसरों के लिए अच्छा कर सकें, राइट. Fine. So moving further, I'm not going to take much of your time. Moving further, हम लोग काम करते हैं इस पे. नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन अपडेट. वेरी इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन अपडेट की अगर मैं बात करूं तो, अगर आप मुझे बात करें तो गाइस कुछ महीने, मतलब कुछ दिन पहले मेरी जो अपडेट है, मैंने जो देखा है कि केवी केवीएस इज स्टेटेड दैट कि दे आर गोइंग टू पब्लिश दियर नोटिफिकेशन विद इन द 4 वीक्स, राइट. मैं अभी बात कर रहा हूँ लास्ट वीक के बाद के अराउंड. ठीक है ना. तो इफ आई एंटिसिपेट इट प्रॉपरली, अगर मैं सही से थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा सही सोच रहा हूँ, अगर अगर मैं
सर सही से मतलब थोड़ा सा अंदाजा लगा पा रहा हूँ, तो मेरे को दिख रहा है मोटा मोटा कि एंड ऑफ द मिड ऑफ द जून, और आई कैन से दैट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, इसके बीच में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। ठीक है ना, इसके बीच में नोटिफिकेशन यू विल गेट फॉर श्योर, राइट, यहाँ पे इस रेंज में आपको मिल जाना चाहिए, नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। ठीक है ना, सो इफ इट इज कमिंग अराउंड जून और जुलाई, सो विद इन 2 or 3 months we can expect your examination. So around September or October, around this you will get your, you have to give your exam. So around this is June, guys. So if I count June, July, August, September. So around September, if I extend it further, let's say October. So it's June. So we have around 4 to 5 months, no, or 3 to 4 months around we can have. So 3 to 4 months. If I'm very lucky, then we will get 4 to 5 months, right? So 3 to 4 months means around 90 days to 120 days, or here 120 days to 150 days. राइट, सो वी हैव दीज मेनी ऑफ डेज वी हैव इन हैंड। सो अगर सेकेंड वाला केस है तो गैस हम लोग के पास ठीक ठाक टाइम है, हम लोग मेहनत कर सकते हैं और मजा मान सकते हैं, निकाल ही लेंगे यार, ठीक है ना, कर सकते हैं आराम से। फाइन, सो दिस इज माई एंटिसिपेशन। गाइज यहाँ पे स्टार्ट करके लिख देता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। नहीं तो कल को तुम लोग मेरा गला पकड़ लोगे, सर आपने बोला था इस समय आएगा, नहीं आया। तो गाइज जो मैं एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ मैंने आपको बताया विद प्रॉपर रिसर्च एंड डेफिनेटली मेरा कोई केवीएस में काम तो करता नहीं कि मेरे को काम में बताएगा, अंदर की खबर नहीं, ठीक है ना। जैसे आप लोग बोलते हैं सुनते हैं न्यूज रीडर में कुछ अज्ञात लोगों ने बताया है या फिर गुप्त सूचना है, तो वैसा है। मैं भी आप लोगों की तरह एक कॉमन बंदा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मैंने पढ़ा, उससे एनालाइज करके मुझे लगता है इसके बीच में आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके, होपिंग फॉर द बेस्ट। नाउ मूविंग फर्दर हियर, नाउ व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी, वेरी $100 क्वेश्चन, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी। अब देखो गाइस, स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करता हूँ तो फॉलो द गिवन शेड्यूल। अब ये शेड्यूल कहाँ पे मिलेगा भाई तुम लोगों को, राइट, ओके, फॉलोइंग दिस शेड्यूल मैं अभी दिखा रहा हूँ शेड्यूल कहाँ से मिलेगा। टाइमली रिवीजन, mock test, follow the regular videos on the QPT teachers channel, right? Definitely I'm going to, we have this channel, right? And regularly we are going to give you the videos on this one and all of our free of cost, right? You will not have to pay a single penny for the classes, right? So these things you should have to follow the given schedule. You have to first, this I will talk about this one. अब इसमें बात करने से लिए गाइस बहुत थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड करके बात करूंगा, ठीक है ना। वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ पहले। आ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा बंद करता हूँ, मैं आपके सामने शेड्यूल खोलता हूँ पहले, ठीक है, जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। लेट मी डू दिस थिंग फॉर यू। अच्छा, आई होप सो दैट कि आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा होगा मेरे से। आई होप सो आप लोगों को ये शेड्यूल दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है, मैं एक एक करके बात करता हूँ आपसे। सबसे पहले इस शेड्यूल बनाया जो है और किस बेस पे बनाया उस पर मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख पा रहे हो, ये मैंने आपके लिए एक्सेल बना के रखा हुआ है। यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे guys, थोड़ा सा गौर अगर आप लोग करोगे तो ये मेरा है केवीएस पीजीटी सीएस 2022 पीवाईक्यू एनालिसिस। तो मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर का जो पेपर आया था उसका एनालिसिस मैंने प्रॉपर्ली करा हुआ है, ठीक है ना। तो करने के बाद मुझे दिख रहा है कि जैसे मैं गाइस देखिए कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स में आए हुए हैं। हार्डवेयर में एक क्वेश्चन सब टॉपिक, यूनिट फैमिली से 2 क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग के एक क्वेश्चन, राइट। ऐसे ही बाकी बाकी टॉपिक से सब टॉपिक से एक, हर सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए क्या क्या आए मैंने वो कर दिया है, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको डाउनलोड कर लीजिएगा उसे, ठीक है। अब मैं मोटा मोटा अगर मैं बात करूंगा इसमें, अगर थोड़ा सा एनालिसिस प्रॉपर्ली कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर पेन सो आप लोग इजी होगा समझना।
तो कंप्यूटर सिस्टम से मेरे पास क्वेश्चन आए हैं 10, ठीक है ना। कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आए हैं 36, और ये पूरा पूरा था पाइथन के ऊपर, ठीक है ना। इसके डेफिनेटली मैंने सब टॉपिक डिवाइड कर दिए, पाइथन एंड प्रिंट कमांड से तीन क्वेश्चन, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल से एक क्वेश्चन एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स से गाइस मेरे पास है दो क्वेश्चन। सिमिलरली कंप्यूटेशन थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग टू पाइथन से है 10 क्वेश्चन। अगर मैं गाइस पाइथन पाइथन की बात करूँ ना, 36 प्लस 10, 46 क्वेश्चन तो केवल यहाँ से है, 46 क्वेश्चन केवल पाइथन से लास्ट है। कंप्यूटर नेटवर्क में 4 क्वेश्चन आए हुए गाइस, डेटाबेस मैनेजमेंट से 9 क्वेश्चन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम से एक क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन द पाइथन अगेन फिर 4 क्वेश्चन गए, वहां पे 46 हो चुके थे ऑलरेडी, 4 और बढ़ गए, ठीक है ना। डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से एक क्वेश्चन, 9 उधर थे और इधर एक और आ गए। इमर्जिंग ट्रेंड से 2 क्वेश्चन, डेटा हैंडलिंग विद पांडा 7 क्वेश्चन, फिर से हम लोग को पाइथन से रिलेटेड, पाइथन के मॉडल से हम लोग को क्वेश्चन आया है 7, ठीक है ना। उसके बाद गाइस फिर से हम लोग डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज से फिर 11 क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। ओके, देन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क 2 क्वेश्चन, सोसाइटल इंपैक्ट्स एक क्वेश्चन। तो आप लोग देख पा रहे हो गाइस, ऐसे करके डिवाइड कर दिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, सब टॉपिक्स में मैंने डिवाइड कर दिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से बोल रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको लगता है कि आपको डाउनलोड करना है, यू कैन डाउनलोड इट फॉर योर यूज, राइट, ठीक है ना, इससे आपका ही फायदा है, ठीक है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस केम इन द प्रीवियस ईयर, मैंने इनकी प्रायोरिटी लिस्ट डिजाइन करी। तो देखो गाइस, जैसे मैंने बोला पाइथन से, ठीक है ना, पाइथन अगर मैं काउंट करूँ 36 प्लस 10 46, 46 और 11, राइट, दैट इज 57 क्वेश्चंस केवल केवल पाइथन से आया, केवल केवल पाइथन से। आप अंदाज लगा सकते हो गाइस, 57 क्वेश्चंस आउट ऑफ द 100 क्वेश्चंस, राइट, अराउंड 60% ऑफ द पेपर केवल पाइथन से आ गया गाइस। उसके डीबीएमएस और एसक्यूएल की बात करो तो 11 और 9 20, 20 और 21, 21 क्वेश्चन यहाँ से आ गए गाइस, ठीक है ना, अगर मैं काउंट करूँ। फाइन, तो उसी के बेस पे मैंने प्रायोरिटी लिस्ट डिजाइन करी है। मैं प्रायोरिटी लिस्ट को मैंने डिसाइड करा, और प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, पाइथन, उसके बाद हम लोग डीबीएमएस कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली पाइथन, डीबीएमएस, सीक्वल, then we can go with the networking, then COA, that is computer organization and architecture आप बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग के ये टॉपिक्स हम लोग सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, इमर्जिंग ट्रेंड, सोसाइटी इम्पैक्ट्स, ये बात के टॉपिक्स हैं। तो मेरा जो शेड्यूल मैंने बनाया है मैं आपको दिखा देता हूँ। आई हैव गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द पाइथन क्लासेस, ठीक है ना। मैंने पाइथन का हाईएस्ट प्रायोरिटी दी, ठीक है। तो 1 जून आज 1 जून है, यू विल गेट द टुडे इंट्रोडक्टरी वीडियोस और इंट्रोडक्टरी वीडियोस क्लास। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तो गाइस, मैंने जैसे बोला, ये एक्सेल शीट मैं आपको वीडियो लिंक में दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको करना है डाउनलोड, ठीक है ना, और रेगुलर बेसिस पे डाउनलोड करके रखना है ऐसे, ठीक है। ध्यान से सुनिए क्या बोलना चाहता हूँ। पहले तो मैंने डे वाइज मैंने कर दिया कि पहले दिन में ये मैं 45 दिन का आपका शेड्यूल बना के दिया गया। जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल डू द सेकेंड फेज, वहां पे मैं फिर से नेक्स्ट शेड्यूल बनाऊंगा, उसमें फिर करेंगे काम, ठीक है ना। पहले ये 45 दिन हम लोग अकम्प्लिश करते हैं, ठीक है ना। एक ऊपर का फेज पहले कंप्लीट कर ले, फेज 1, उसका फिर दूसरा फेज थोड़ा सा ज्यादा डीप जाएंगे, फिर अगर टाइम लगे तो थर्ड फेज भी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, डे 1 1 जून जो आज है, आज आपको इंट्रोडक्टरी क्लास करवा रहा हूं मैं। इसकी वीडियो लिंक आपको यहाँ पे मैं दे दूंगा, ठीक है ना। आपको जब डाउनलोड करोगे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे स्टेटस आपको चेक करना है। हर आप उसमें जाओगे ना, सब में स्टेटस है। स्टेटस में क्या है, ध्यान से सुनिएगा ठीक से ना। अगर आप स्टेटस चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 चीजें, वॉच, पार्शली वॉच एंड नॉट वॉच। दैट मीन्स अगर 1 जून कोई भी पर्टिकुलर दिन की बात करें, जैसे हमारे 2 जून का, 2 जून में मैं पाइथन की पहली क्लास दूंगा, उसका वीडियो लिंक मैं यहाँ पे डालूंगा, क्यूपीटी वीडियो लिंक मेरे चैनल पर। इतने सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ उसमें, उसका वीडियो लिंक मैं यहाँ पे डालूंगा। आपको स्टेटस जाके चेक करना, जब आप अपने घर में डाउनलोड कर चुके हो उसके, ठीक है ना, उसके बाद आपको अपने स्टेटस को अपडेट करना हर दिन, ठीक है ना, जिससे आप लोग इसे चेक कर सको कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, सिंपली आपको यहाँ पे भी दिखेगा, जब आप स्टेटस में चेक करोगे यहाँ पे क्या दिखने वाला है आपको, क्या वॉच करा है और फिर या नहीं करा है, वॉच्ड, पार्शली वॉच और नॉट वॉच। अगर आपने वॉच कर लिया तो आपको अपना शीट पे इसको वॉच्ड स्टेटस दे देना, जिससे आपको पता रहे कि आपने क्यूपीटी का वाला लिंक, वो वीडियो आपने चेक कर चुके हो, ठीक है ना।
अच्छा, अगर मान लीजिए आपने वॉच नहीं किया है, ठीक है ना, तो आपको वहां पे यहाँ से सिलेक्ट करना है नॉट वॉच्ड। अगर आपने आधा वीडियो छोड़ के रीड करके छोड़ दिया, देख के छोड़ दिया, तब आपको यहाँ पे पार्शली वॉच करके स्टेटस चेक करना, चेंज करना है। सिमिलरली गाइस, क्यूपीटी होमवर्क वीडियो लिंक डेफिनेटली इंट्रोडक्शन क्लास में कोई हम लोग का क्यूपीटी होमवर्क नहीं है, तो मैंने इसमें नॉट एप्लीकेबल लिखा है। बट सेकंड क्लास से आपको डेफिनेटली होमवर्क भी मैं दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने थोड़ा सा देखें यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करूँ तो आपको थोड़ा जल्दी अच्छा दिखेगा, लेकिन जूम इन लिटिल बिट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने होमवर्क डाल रखा है, ठीक है ना। तो फ्रॉम सेकेंड क्लास में मतलब कल से, ठीक है, आसपास जो है कल से आपको यहाँ पे होमवर्क का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। उसको भी आपको पहले तो होमवर्क अपने आप से करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो होमवर्क का लिंक आपको मिल जाएगा, उसका भी यहाँ पे आपका स्टेटस आपसे अपडेट करना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपकी डाउनलोड कर लेना, हर क्लास को देखना है, ठीक है ना। कीबोर्ड वीडियो लिंक देखना में जो जिस दिन का क्लास होगा उसका वीडियो देखना है, अपना अपडेट स्टेटस अपडेट करना है। सिमिलरली जो होमवर्क मिला है उसको कर लेंगे, और अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई भी क्वेश्चन, आपको उसी दिन, जैसे मान लो आज मैंने होमवर्क दिया तो कल में मैं उसका वीडियो अपडेट कर दूंगा, तो आपको उसको चेक कर लेना, उसको देख लेना वीडियो को पूरा, और उसका अपना उसी हिसाब से अपना स्टेटस चेक कर लेना। थर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिविजन। क्या आप टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको सेल्फ रिवाइज कर रहे हो? वेरी इंपॉर्टेंट। उसलिए मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि यहाँ पे आप क्या करोगे। मान लीजिए आपने थर्ड इस क्लास में हो, ठीक है ना, ये टॉपिक मैंने कवर कर दिए, तो आपने कौन कौन से टॉपिक सेल्फ रिवाइज कर लिए, ठीक है, यहाँ पे आपको करना है, और यहाँ पे जाके फिर से स्टेटस आपको चेक करना है, आपको अपने आप से पुट करना है कि आपने क्या सारे टॉपिक अगर आपने कर लिए, तो आपके वो सब टॉपिक में रिवीजन कर लिया, या फिर स्टेटस आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने नहीं किया है तो आपको फिर उसको करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमें क्लियर नहीं कर से ये आपको क्लियर हो चुका होगा, तो बोलो। ठीक, तो ये आपको फॉलो करना है। मैंने डे वाइज लिख दिया है, आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है, ठीक है। सो आई एम जस्ट क्लोजिंग इट एंड मूविंग टू बैक टू माई पीपीटी। सो मैंने शेड्यूल के बारे में आप लोगों से बात कर ली। अब देखिए, बेस्ड ऑन दिस प्रायोरिटी जो मैंने आपसे बात कर ली, मैंने कहा इस अंटायर शेड्यूल को तीन पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है ना। पहले हम लोग बात करेंगे पार्ट वन, हम लोग क्या क्या कवर करने वाले, पाइथन कवर कर लेंगे और एसक्यूएल डीबी में। क्योंकि इस पोर्शन का पहला जो पार्ट है वो हम लोगों को होगा प्रैक्टिकल बेस। क्या होगा? प्रैक्टिकल बेस, जहां पे हम लोग ज्यादा कॉन्सेप्ट से ज्यादा हम लोग प्रोग्रामिंग के बारे में ज्यादा बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करेगा, सबसे अच्छी बात क्या है, मैं जो करने वाला हूँ मैं केवल आपको थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि इस पार्ट में प्रैक्टिकल ज्यादा है, ठीक है ना। अगर आप कोड नहीं करोगे, कोड नहीं देखोगे, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, अगर क्वेश्चन घुमा दिया तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, दोनों पार्ट करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, पाइथन के बारे में, सीक्वल के बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ में मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, मतलब डायरेक्ट कोड लिख के दिखाऊंगा, ठीक है ना। प्लस हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे उनके बेसिस के ऊपर, ठीक है ना। प्लस मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, वो भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। am I clear? सेकंड पार्ट जो मैं जाता हूँ, सेकंड पार्ट कम और ज्यादा कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बेस करता है, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है हम लोग का, ठीक है ना। प्रैक्टिकल कम है, तो इसमें डीवीएस कॉन्सेप्ट्स हैं, सीयू है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, नेटवर्किंग है, कंप्यूटर सिस्टम। तो पहला पार्ट खत्म होने के बाद वी विल स्टार्ट विद दिस पार्ट, ठीक है ना। शेड्यूल में ऐसे ही बनाऊंगा जो मैंने अभी एक्सेल में लिखा है। तो आपने देखा होगा पहला क्लास मैंने पाइथन का रखा है, तो वी विल कवर पाइथन एंड सीक्वल फर्स्ट। पहला पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड पार्ट में इनको लेके बनाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड पार्ट की बात करूं तो ये पूरी तरह थियोरेटिकल पार्ट है, पूरी तरह थियोरी का केस है, यहाँ पे प्रैक्टिकल के कुछ भी नहीं, ठीक है ना। इमर्जिंग ट्रेंड्स, सोसाइटी एंड लॉ एंड सोसाइटल इम्पैक्ट्स, ठीक है ना। तो ये मेरे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये 10 टॉपिक में मेरा खत्म।
तो पहला फेज वन, दैट इज द पार्ट वन हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन वी विल कवर पार्ट टू, एंड देन थर्ड वन इज पार्ट थ्री। दिस विल बी द ऑर्डर वी आर गोइंग टू फॉलो इन आवर शेड्यूल, ठीक है ना, हम लोग क्लास ऐसे ही आएंगे, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दिस, ठीक है ना, हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं आप लोगों को। Recorded and live session, bi-weekly doubt clearing session and bi-weekly monitoring session, mentoring session। तो guys, पहली चीज तो हम लोग आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन भी लेके आएंगे। अभी मैंने आपको 45 दिन का आपका शेड्यूल दिया है, ठीक है, जिसमें मैं ट्राई करूंगा अभी रिकॉर्डेड वीडियोस लेके आऊं, और अगर जरूरत पड़ेगी आप लोग अपना प्यार देंगे, आप लोग अपना अच्छे से कमेंट करेंगे, अच्छी अच्छी चीजों को बताएंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली मैं लाइव सेशन भी लेके आऊंगा, ठीक है ना, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो पहले हम लोग पहला फेज कंप्लीट कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग और लाइव सेशन वाला, उसके बाद करते हैं 45 दिन के बाद, या फिर 45 अगर आप लोग इंटरेस्ट ज्यादा शो करोगे तो मैं बीच में भी लाइव सेशन लेके आऊंगा, बट मेरे रिकॉर्डेड सेशंस जरूर पड़ेंगे, जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट केस बाई वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या डाउट्स हैं उसको भी एड्रेस करना मेरी जिम्मेदारी है, क्वांटाफाइटेक के हर मेंबर्स की जिम्मेदारी, ठीक है ना। तो बाई वीकली मतलब 2 वीक में एक क्लास में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन दूंगा, वो मैं लाइव लूंगा, ठीक है ना। आप लोग जुड़िएगा मेरे साथ, हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बाई वीकली मेंटरिंग सेशन, सिमिलरली 2 हफ्तों नो 2 वीक में एक क्लास में आपकी मेंटरिंग सेशन दूंगा। ओवर देयर आप मेरे से बात कर सकते हैं गाइस, अगर आप किसी प्रॉब्लम में है कि जैसे मान लीजिए मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या फिर मोटिवेशन नहीं आ रहा, डिप्रेशन आ रहा है, एन नंबर ऑफ वेज, एन नंबर ऑफ थिंग्स, ओवर देयर आई विल टेक द मेंटरिंग सेशन, दैट हाउ यू कैन फास्टन योर प्रिपरेशन, हाउ you should have to prepare yourself properly so that you can reach your goal, right? Okay, so this is the services we are going to provide. For the time being, definitely we are planning to bring the with the mocks and the other things as well, right? But for the time being, these three things we are going to provide, right? First is the recording and the live session, second is the bi-weekly doubt clearing session, and the third is the bi-weekly mentoring sessions. Okay, now moving further, it's very important as do's and don'ts. What you have to do and what not you have to do. So what you have to do, focus on the fundamentals. Guys, केवीएस पीजीटी का एग्जाम ऐसा नहीं है कि यार आपको पीएचडी वाली नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बट आप फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि कंपटीशन हाई होने वाला है, जिसमें कोई दो दो राय नहीं है, कंपटीशन हाई होगा। तो आपको पहले क्या करना है, अपनी फंडामेंटल्स पे काम करना है। क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। ये मैं आपका यार आप लोग कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बना दिया और बना भी दूंगा आगे जाके, ठीक है ना। ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आप क्यूपीटी पे छोड़ दो और मेरे पे छोड़ दो, दैट इज क्वांटाफाइटेक के मेंबर्स पे छोड़ दो, हम लोग ये देख लेंगे स्ट्रक्चर कैसे प्लान बनाना है, ठीक है। बट आपको स्ट्रक्चर प्लान पे ही पढ़ाई करनी है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, एज आई टोल्ड यू गाइस कि वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग लॉट ऑफ मॉक्स फॉर यू, ठीक है ना। few are definitely free of cost and few are paid one, but for the time being, with timing, currently we are working on it, ठीक है ना। बट आपको अब जब भी अपनी प्रिपरेशन करनी है मॉक्स के साथ करनी है, ठीक है ना। डेफिनेटली अभी नहीं टाइम है मॉक्स देने का। आई विल टेल यू दैट when to give start your mocks, right? From using different platforms, different platforms are providing the mocks, or if you like, then you can take mocks on the QPT platform as well, which will come soon. नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। सारा खेला तो गैस टाइम मैनेजमेंट का है, मैं बता रहा हूं, दो ही चीजें गैस, एक है एक्यूरेसी, एक है टाइम मैनेजमेंट। इन दोनों पे जिसने महारत बना ली गई उसका एग्जाम नहीं निकल, ऐसा नहीं हो सकता उसका एग्जाम में वो फेल हो जाए, 100% क्लियर हो जाए। एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज लास्ट, जिसको मैं डबल स्टार्ट होता हूँ। हम लोग में क्या होता है ना guys, जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जब एक्साइटेड होते हैं बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और पाइल अप कर लेते हैं दिमाग में, इतना सारा सब कुछ पाइल अप। बट दिस क्या है ना, यहाँ पे जैसे कंप्यूटर है ना, कि कंप्यूटर की मेमोरी फिक्स है ना, ठीक है ना, कुछ दिन बाद मेमोरी या तो उसको उसमें से डिलीट करना पड़ता है, ठीक है ना, या फिर नया मेमोरी लगाना पड़ता है, तो भर जाता है ना मेमोरी। तो हम जितना पाइल अप करोगे तो आपका ब्रेन तो यार लिमिटेड मेमोरी ना, तो वो भर जाएगा यार, ठीक है ना। आजा माजी सटकली, हाँ, तो वो भर जाएगा। तो आपको बार बार उसको रिन्यू करना पड़ेगा, रिवाइज कर, वेरी इंपॉर्टेंट,
ट्रस्ट मी गाइस, आप कम पढ़ो बट रिवाइज रेगुलर करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत सारी पॉइंट्स है guys जो आपको करने चाहिए, बट उनमें से ये मैंने 5 पॉइंट उठा के रखे हैं जो कि मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करने का। अच्छा, क्या नहीं करना है आपको guys? ठीक है ना। डू नॉट क्रैम एट द लास्ट मिनट। मैंने बहुत देखा है guys, एग्जामिनेशन हॉल में आप देखोगे बाहर बंदे बुक लेके बैठे हैं, ऐसे करके पढ़ लें, उससे मत करो यार, लास्ट टाइम पे क्रैम नहीं करता है। ठीक है ना। उससे और बवासी होता है एग्जाम। ठीक है ना। लास्ट लास्ट में नहीं होना है, ठीक है ना। अभी से तैयारी शुरू करो, मेन बात ये, अभी से करोगे तो लास्ट में जाके आपको क्रैमर नहीं होना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, डोंट ओवरलोड ऑन द प्रैक्टिस पेपर। अब यार मैंने देखे यार स्टूडेंट यार 100 200 300 पेपर लगा रहे हैं यार, क्या मतलब है यार 100 200 300 पेपर का, पीएचडी तो नहीं करनी है। ये मैक्सिमम 40 पेपर लगाने हैं एग्जाम से पहले, ठीक है ना, एग्जाम तक। क्योंकि प्रॉपरली एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। एग्जाम जो भी आप पेपर दे रहे हो, मॉक लगा रहे हो, प्रॉपरली उसको एनालाइज करो। 40 पेपर यार, अगर मैं 100 क्वेश्चन, 40 × 100, 4000 पेपर क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हो, कमाओ ना यार, क्या बात कर रहे हो। उससे भी कुछ नहीं चाहिए, मैक्सिमम 40 पेपर, जिससे ज्यादा करना ही नहीं। 40 मॉक्स, उससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आप ओवरलोड हो जाओगे, वो नहीं करना। डोंट वेस्ट टाइम ऑन द लेंथी क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट, उसका एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है ना, उसको स्किप कर लो यार पहले फॉर द टाइम भी। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप छोड़ के चले जाओ, बट टाइमिंग के लिए स्किप कर दो। उसके बाद जब बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे, उसके बाद उसमें आओ। ठीक है ना। यही हम लोग का टाइम मैनेजमेंट का फंडा है। मैं आपको बताता रहूंगा क्लास में थ्रू आउट कि आपको कैसे कैसे करके टाइम को बचाना है अपने लिए। ठीक है। डोंट मेक अननेसेसरी assumption, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक सिंपल मैथ्स का एग्जांपल देता हूँ, बोल देता है ए एंड बी, ए बी एंड सी डी आर लाइन्स। ठीक है ना। और कुछ ऐसे बना के दे देता है। ठीक है ना, क्वेश्चन में ऐसे कुछ बना के देता है, मैं सिंपल मैथ्स के साथ रिलेट कर रहा हूँ। तो कैसे हम लोग स्टूडेंट ना इसको पैरेलल लाइन समझने लग जाते हैं, अपने आप से अज्यूम कर लिया हमने पैरेलल लाइन, बट क्वेश्चन कुछ दिया ही नहीं है सब। ठीक है ना, कुछ बोला नहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, बट हमने देख जैसे क्योंकि डायग्राम ऐसा दिख रहा है कि दोनों पैरेलल, तो मैंने अज्यूम कर लिया, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना। डोंट मेक अननेसेसरी assumption, आपको assume नहीं करना अपने आप जब तक कुछ में गिवन ना हो। ठीक है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेवर नेगलेक्ट स्लीप एंड न्यूट्रिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे फिर से 3 स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है ना। प्रॉपर स्लीप और न्यूट्रिशन आपको जरूरत है, क्योंकि आपका जो शरीर है, जो आपका बॉडी है, दैट इज अ मशीन। और मशीन को चलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए आपको प्रॉपर स्लीप एंड न्यूट्रिशन चाहिए। जो भी बंदा बोलता है कि 15 घंटे 20 घंटे पढ़ो तभी सिलेक्शन होगा, बकवास कर रहा है। किसी भी आईआईटी से या फिर कोई भी सक्सेसफुल बंदा है उससे पूछ लेना यार, मैक्सिमम 10 घंटा काम करते हैं यार लोग, उसके अंदर नहीं करते। अगर काम 10 घंटा से अधिक काम कर रहे हो तो गधे, और क्या बोलूं मैं आपको, हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर में अंतर यही है। स्मार्ट वर्कर कम टाइम में ज्यादा काम करते हैं, हार्ड वर्कर ज्यादा टाइम में कम काम करते हैं, राइट। सो यू हैव टू बी ए स्मार्ट वर्कर रेदर देन हार्ड वर्कर। ठीक है ना। चलो, एंड द लास्ट पॉइंट इज हियर, that how you can contact us, right? So guys, here I'm going to tell you that you can mail us on the quantaphytechteachers@gmail.com. This email ID is specifically for all the students who want to be a teacher in future, right? We will we are doing very hard work for you guys. तो आप लोग अगर मेरे से कांटेक्ट करना वाया मेल, आप इस पे मेल कर सकते हो। फोन नंबर, दैट इज द मोबाइल नंबर of the office of QPT is 6290359184. You can call over there or send a WhatsApp message over there. No, we are going to get back to you. And also you can follow us on the Quantaphytech teachers. So these are the three ways you can contact to us. Okay, guys, I hope so that I have covered all important and necessary points related to the KVS 2025 recruitment. If you have any doubts or if you want to ask anything, please do comments in the comment box, right? I will personally check it and definitely going to give you the reply as soon as possible, right? So guys, आज के लिए इतना ही रखते हैं। Keep learning, be healthy and be happy. And wait. Don't forget to like my videos, subscribe the channel, and please press the bell icon so that you will get my notifications for my next videos. Thank you very much, guys. Shubh Ratri. अरे बाबा रे बाबा, बोलते बोलते स्नान को ये देख रहा है। रामट्टा बाबू।